as much as Vizag was a selected target for Japanese attacks and was thus strengthened. Then after independence, the Indian Navy primarily operated from Bombay, that is present-day Mumbai. The India-China War of 1962 happened and quickly followed by the India-Pakistan War of 65. Okay. The Indian militaries had to be modernized and strengthened for the defense of the nation. Right. The 60s was the time when Russian ships and submarines started coming to India. With this, the modern element came for their maintenance and basing, and the naval dockyard was expanded in 1962. And then in 1968, the Eastern Naval Command was formally established in Vizag. In 71, the powerful Eastern Fleet, also known as the Sunrise Fleet, was formed and immediately took part in the 1971 India-Pakistan War and performed brilliantly on the East Coast. But those stories at a different time, since the Eastern Naval Command has moved from power to power and is home to some of the latest and most powerful warships of the Indian Navy. Okay. We were seeing these fleet and the displays, magnificent display. Is there a procedure why these warships, submarines were on display today? What are they showcasing? How are they showcasing India's prowess? So to keep it very short, it is to showcase the might and reach of navies. If a warship can reach a place, it shows others can follow. Okay. Since we have become a builder's navy, we want to show the world our indigenously built ships. Right. Like for example, you have discussed Vikrant, Visakhapatnam. Then you have the Delhi class, the new Nilgiri class, the Shivaliks of the ENC. Then we also bring in our latest ships, which have multi-role capabilities like Anvesh, Nistar, the Arnala shallow water ASW ships, and the latest survey ship, Ikshak. And then we showcase some special ships like Tarangini, which is a sail ship, and we have the Madei and Tarini, which have circumnavigated the globe. And since this is a maritime domain event, other maritime forces such as the Coast Guard, the Shipping Corporation of India, research vessels of the government are also showcased. We have the Samarth class pollution control ships. We have Sagar Anveshika from the National Institute of Ocean Technology. We have the Shipping Corporation of India Saraswati, an offshore support vessel. There are also submarines which we saw, our underwater strength, the aircraft of various types, which shows the three-dimensional force that the Indian Navy is. We show our best to the world, and similarly foreign navies send their most capable ships to the IFR. So as you were mentioning these names, Vikrant, Nilgiri, all these have been taken a rebirth, reincarnation. So the name never dies, a name in Navy never dies. What is the story behind this? Well, it's a naval tradition across all navies, followed from centuries, that the name of a ship never fades away. One time or the other, names are repeated. Okay. For example, INS Delhi was always there even pre-independence as HMIS Delhi. Or the later ships, Nilgiri had said our first indigenous warship construction in 76, Udaygiri, Himgiri, and even Vikrant, which we showed. The crest and the name is always carried forward as a legacy. Right. When we are talking about legacy, in the early century, early times, it was India that had the navigational instruments, and then the world took over. World took it and, maybe modified it according to their needs. What is the legacy behind the navigational instruments that we had at that time? As mentioned earlier, India was a prominent and powerful maritime nation. You become maritime when you cross the oceans, you leave sight of land. Sir, we are getting visuals. We are seeing the visuals where 21 gun salute is happening. We'll go to the jetty.
So we saw today 71 ships, which also included the warships and other vessels over here in this spectacular fleet, and a grand display both from India and the friendly foreign nations. This definitely showcases how the naval powers across the globe have progressed and they've come together. The partnership has strengthened. जिस तरीके से हम आपको पहले भी बता रहे थे कि 71 शिप्स यहाँ पर होंगी, इनके अलावा हमने सबमरीन्स भी देखे, एक एयरक्राफ्ट का बहुत अद्भुत यहाँ पर एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम देखा, शो देखा। ये सारा दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय नौसेना, और न सिर्फ भारतीय नौसेना बल्कि भारतीय नौसेना अन्य देशों के, मित्र देश के नौसेना के साथ में भी किस तरीके से तालमेल बनाकर एक काम कर सकती है, एक तरीके से वेल कोऑर्डिनेटेड एक प्रोग्राम अंडरटेक कर सकती है। यहाँ पर हमने ये एक अद्भुत नज़ारा देखा, और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये भारत में तीसरी बार इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है, काफ़ी ग्रैंड स्केल पे हुआ है ये। और जो शिप्स जिस तरीके से यहाँ पर 6 लेन्स में लगी हुई थी, जब शिप INS सुमेधा बीच में से जाती हैं, दोनों तरफ में, दाएं और बाएं तरफ में, हमने देखा कि सेरेमोनियल तरीके से, सेरेमोनियल लेन्स कहते हैं इन्हें, उनमें बहुत अच्छी तरीके से इन्हें एंकर किया गया था। और हर शिप छोटी हो या बड़ी हो, वो अपनी जो सिग्निफिकेंस है या अपनी इंपॉर्टेंस है, वो उन्होंने, साथ ही में हमने कमेंट्री में भी सुनी कि वो प्रदर्शित की। और बहुत खूबसूरती से इन्हें एक डेकअप भी किया गया था। ये अपने सेरेमोनियल डेकअप हुए थे ये सारे शिप्स, ना सिर्फ भारतीय नौसेना के शिप्स बल्कि जो विभिन्न अन्य देशों से आए हुए हैं उनके भी अगर आप शिप्स आपने देखे होंगे तो काफी अच्छे उन्हें डेकअप किए गए थे। और ये पूरे सेरेमोनियल इवेंट्स के लिए डेकअप होते हैं और एक तरीके से सम्मान दिया जाता है जो भी देश में वो आ रहे हैं उन्हें। एक ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी है कि अगर भारत का भी कोई यहाँ पर, भारतीय नौसेना की भी कोई शिप अगर जाती है, ऐसे कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करती है, तो वो भी वैसा ही प्रदर्शन, डेकअप होके प्रदर्शन करते हैं। एक तरह से ये एक दूसरे के देश को सम्मान देने की एक ये प्रक्रिया है। हमने सर से, दोराई बाबू सर से पहले भी बात की थी कि 150 मैन का जो ये सल्यूट होता, 21 गन्स का सल्यूट होता है, या 150 मैन गार्ड जो यहाँ पर होता है, ये भी इसके पीछे बहुत अद्भुत एक हिस्ट्री है और एक काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। 21 गन सल्यूट हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब माननीय राष्ट्रपति ऑन बोर्ड जा रही थी INS सुमेधा के, जो कि आज के लिए प्रेसिडेंशियल यॉट थी। उस पर जाते समय माननीय राष्ट्रपति को 21 गन सैल्यूट तो जब कास्ट अवे हुआ तब मिला ही, उसके पहले में माननीय राष्ट्रपति वहां पर आई और उन्होंने 150 मैन गार्ड का भी एक तरीके से निरीक्षण किया। तो काफी ग्रैंड स्केल पर हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लीट रिव्यू हुआ है वो आज हुआ है, संपन्न हुआ है, काफी भव्य स्केल पे संपन्न हुआ है। और जैसे सर पहले भी बता रहे थे कि 19 यहाँ पर वेसल्स आए हुए हैं और कई सारे अन्य देशों के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हैं। तो ना सिर्फ वेसल्स की ओर से, ना सिर्फ वॉरशिप्स के एक तरीके से, बल्कि पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर काफी ज्यादा मायने रखती हैं। और जो ह्यूमन पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पर हमने काफी देखा है। यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि जो 70 देश हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से ये जब INS सुमेधा बाहर जा रही थी, पोर्ट से निकल रही थी सीज की तरफ में जहां पर फ्लीट हो रहा था, फ्लीट रिव्यू होने वाला था, हमने विशाखापट्टनम की भी काफी सारी विशेषताएं देखी। और विशेषताओं में हमने पहले भी बात की कि रॉस हिल जो है वो अपने आप में एक अद्भुत एग्जाम्पल है इंक्लूसिविटी का। साथ ही हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है जो कई दशकों से भारतीय नौसेना के लिए या भारत के लिए एक इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग का काम कर रहा है। और काफी सारे अद्भुत यहाँ पर हम नज़ारे भी देख रहे थे। हमने जाते समय में यहाँ पर पोर्ट का भी नज़ारा देखा जहाँ पर जो मर्चेंट नेवी जो होते हैं, उनके कार्गोज होते हैं, वो सारे भी जो उतरते हैं, बंदरगाह कहते हैं हम वो सारे नज़ारे भी हमने यहाँ पर देखे। अब हम ये जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं जेटी पे से, नेवल जेटी पे से, यहाँ पर हम रुके हुए हैं कि माननीय राष्ट्रपति डी बोर्ड होंगे, ऑन बोर्ड से
जो INS सुमेधा है, प्रेसिडेंशियल यॉट, वहां से उतरेंगी और वो एक बार फिर ये जो 150 मेन गार्ड हैं वहां से जाते हुए वेन्यू है जो नेवल जेटी है वहां से वो प्रस्थान करेंगी। तो जो तैयारियां होती है कि एक बार शिप लग जाए नेवल जेटी पर और उसका जो उतरने की व्यवस्था होती है वो सारा अभी हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन काफी बड़ा यहाँ पर ये इवेंट रहा, लार्ज स्केल पर रहा और 71 शिप्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें से काफी सारे ऐसे शिप्स हैं जो कि भारत के जो इंडिजिनाइजेशन, आत्मनिर्भरता की जब हम बात कर रहे हैं उस पर काफी एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हुए उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया है। इसमें से मुख्यतः अगर हम बात करें तो INS विक्रांत के बारे में आपने सुना ही, किस तरीके से उसमें जो इंडिजिनाइजेशन का कंटेंट है वो काफी बड़ा रहा है। विशाखापट्टनम सिटी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रंट लाइन डिस्प्ले में अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर INS विशाखापट्टनम भी डिस्प्ले पे थी और विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम जो है वो भी इंडिजिनाइजेशन यानी विशाखापट्टनम क्लास की जो शुरुआत हुई है उसके उसमें इंडिजिनाइजेशन का एक तरीके से फ्लैग बेरर है और यहाँ भी जो कंटेंट है इंडिजिनाइजेशन का वो काफी बड़ा है। तो जहां पे हम बात करते थे कि हम शिप्स ले रहे हैं दूसरे देशों से,